बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए लेवल का ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हमने इसके कुछ इंट्रोडक्शन की बात करनी है ट्रिग्नोमेट्री की। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट, बड़ा यूजफुल और बहुत वास्ट टॉपिक है, लेकिन आपके एएस में इसकी सिर्फ दो चार बिल्कुल बेसिक चीज़ें वो इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ से शुरू करेंगे कि सबसे पहले कि ये हमारा मतलब क्या है इसका, ट्रिग्नोमेट्री, what is the meaning of this word. So this is actually a combination of these words. This way, trigonometry. Okay, now before describing this, let's see that what are meanings of individual words. Try, you know, actually these are Greek words which are used in English. So try is actually an alternative word of three. Now gone, what do we mean by gone? Like we can understand gone by from this word polygon. I hope you know that what do we mean by polygon. That this is again the combination of two words, poly and gon. Polygon such as pentagon. Penta means five, then gon means side. Pentagon means five-sided figure. Five-sided figure. That means penta means five and gon means sides, five sides. Okay, as many sides are there in pentagon, that is five-sided. Polygon means many-sided, a figure with many sides. But there are few conditions along with it, that any polygon like pentagon or hexagon or heptagon or whatever, or three-sided is triangle, four-sided is quadrilateral. So in all of them, one thing is a common condition, that it has to be a closed figure, number one. Polygon is never an open figure like the pentagon or quadrilateral. If there are four sides like this, if it is open here, this is not polygon. It has to be closed. Or a triangle, three sides, this is not triangle only because there are three sides. So as many sides are there, there must be the same number of angles over there, same number of edges. So how can we make same number of edges if the figure is closed? If this is a closed figure, then number of sides and number of angles are equal. So five-sided figure or five-angled figure, there is same figure will be there, because as many sides are there, there will be the same number of angles if it is closed. And if it is not closed, it does not come under the definition of polygon. So gon means number of sides, and number of sides, whatever is the number of sides, there is same number of angles over there. So you can say that trigon means
three sides. Three sides. This word O is like off, and this metri means measurement. Measurement. Okay, now if we rearrange the words, these words, and we convert them to some understandable words, then this would be measurements of three-sided figures. What three-sided figures are called? Triangles. So measurements of triangles. That is trigonometry. So trigonometry means measurement of triangles. That is the simple meaning of this word. So whenever you come across this word, then the first thing that should come into your mind is that this is the measurement of triangles. Now, there are many types of triangles, like acute angle triangle and obtuse angle triangle and scalene triangle, or right angle triangle, isosceles triangle, equilateral triangle. So different types of triangles are there. But regarding measurement, the simplest triangle in the context of measurements, that is a right angled triangle. So how can we draw a right angled triangle? Here, if we consider this length 1 and second is here this way, and the third line will be here. So this is a right angled triangle. Simple, this angle is a right angle. And I'm sure you know that wherever two lines meet to make an edge, then, or you can say that where an angle is formed when two lines meet at a point, then that point is called vertex. So these are the word is vertex, and its plural is vertices. So vertices of any geometrical figure, this is an understanding that we represent vertices by capital letters. So this is, you can say, A, let me write B on that side. So this B is here, and let's take C over here. So vertices are indicated by capital letters, and in order to make the relationship between vertices and the sides, what we do, that whatever is the vertex, like this is A, then side opposite to A is denoted by same small letter. This is capital A, then this is small a. If this is
capital B, then side opposite to B is small b, and this is small c. Okay. Now, the names of sides, they are also Greek names. So, names dedicated to these sides depend on that what angle is considered. So, this is undisputed. This name is always, this is always opposite to the right angle. So, its name is hypotenuse. Line opposite to right angle is always hypotenuse. Now these two are left, this side and this side. So what should be their names? So what we do, that we name them as with the reference of this angle. So what is the reference of this angle? That this side A, what is it? What is its reference to the angle? That is opposite to the angle. So we dedicated this name opposite with reference to this angle, that this is opposite. If this angle is considered, then this will be opposite. This is a very common sense, that whatever is the angle, side opposite to that is opposite. And then this side is left with reference to this angle. Once again, this is adjacent to the angle. So we name this side as adjacent. Okay. Now, as we have named them as hypotenuse, opposite, and adjacent, so there are three sides. And if there are three sides, then there are three possible ratios between these sides. Before talking about that, one thing we must know, that this is the property of triangles, that in any triangle with any measurements, if this is a triangle, you can see very clearly that this is the smallest angle, number one. This is larger than that, we will name it as number two. And this is the largest one, number three. Smallest to largest, we have named them, ranked them, you can say 1, 2, 3 in ascending order. Smallest, larger than that, and the largest. If these angles are smallest, if this is smallest, then this side will be the smallest. And this is between largest and smallest, then the length of this side will be between these two. And the angle which is the largest, then the opposite side is the largest. So not in the same ratio of angles, but one thing that is confirmed, that if angle is smaller, side opposite to that is also smaller. But it should be considered that, like these two sides, A and B, if they are in the ratio 1:2, then it does not mean that angles opposite to them will also be in the ratio 1:2. No. Ratio is not same, but if A is smaller than B, then angle opposite to A must be smaller than the angle opposite to B. That's what we need to understand. So in case of a right angled triangle, if triangle is right angled, then obviously
And you know that this property of triangles, that sum of the three angles of a triangle, any triangle, that is always 180. If this is the triangle, then angle A, B, C, their sum is 180. In this case, 1, 2, 3, their sum is always 180. But in this case, if one of them is 90 degrees, then it becomes convenient for us that if one of them is known as 90 degrees, then the sum of other two angles must also be equal to 90 degrees. So sum of these two angles is always 90. That means if this angle is 30 degrees, then the value of this angle will be 60, 30 and 60. But if this angle is 40, if I make it 40, then what should be the value of this angle? How can we determine the value of this angle? That sum of these two angles must always be equal to 90 in case of right angle triangle. So if this is 40, then the other angle here, that will be 90 minus 40, 50. So if I make a list of A and B, A is this angle and B is this angle. So you can repeat with me that if this angle is 10, what should be the value of B? 90 minus 10, that is 80. What you have to do, whatever is the value of A, subtract it from 90 degrees, then the remaining will be the value of B. If this is 20, this is 70. So that sum of these two angles is always 90 degrees. If this is 30, then this angle must be 60 degrees, so that sum is 90. If this is 40, this angle will be 50, so that the sum is 90. As I said, that what is the reason that sum of these two is 90? Because one of the angles is right angle, so sum of the remaining two will always be 90 degrees. So that's what you need to recall, the basic things. I'm sure you are well aware of these things, basic concepts, but this is just to recall them, because later on it would be a problem while we will discuss the next concepts of trigonometry. So before that, you should be aware of these basic things. Okay, now what we do, that if we usually we denote an angle by the symbol theta. Sometimes theta or alpha or beta, most of the times these symbols are used, or x. So if this is theta, this is 90 minus theta, as we have discussed right now. This must be 90 minus theta. So if the angle considered is theta, this is opposite. If angle considered is 90 minus theta, then this side will be opposite. So you can say for theta, if we have decided to consider theta as the angle of reference, so then A side opposite to theta is opposite, and side adjacent to theta is adjacent. Now, one thing, if you can do, I think very easily you can remember these ratios. Actually, I know very well that there are some sentences
which make you memorize these relationships. But I discourage the way they are memorized or they you try to remember them, क्योंकि उनके पीछे कोई कॉन्सेप्ट नहीं, सिर्फ एक रट्टा लगाने की हद तक आप उसको वो कर सकते हैं कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक, और कुछ लोग कहते हैं थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग और दिस एंड दैट। उससे आप ये अक्सर मैंने देखा है बच्चों को कि जब भी पूछे कि साइन थीटा क्या होता है तो पहले वो सेंटेंस पूरा अपने माइंड में रिकॉल करते हैं। सम पीपल हैव, ओके सर, दिस विल बी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और cos theta, some people have curly brown hair. So that is not a better way to understand these ratios. उससे फिलहाल यानी वक्ती तौर पे आप जो है उसको रट्टा तो लगा लेते हैं, लेकिन क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं होता उसके पीछे, तो इसलिए लेटर ऑन जब उसको डिफरेंट फॉर्म्स में इसकी एप्लीकेशन का टाइम आता है तो फिर ऐसे बच्चों के लिए प्रॉब्लम बनता है कि जिन्होंने इस तरह से रट्टे लगाए होते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि इसको समझ के कर लें। उसमें समझने में कुछ रिस्ट्रिक्शंस फिर भी हैं, और वो ये कि we use the words sin theta and cos theta, cosine theta. Actually, that word is cosine. These are Greek words. So, instead of going into detail that what actually truly these words mean, what we can do, we can interpret them as a ratio between opposite and hypotenuse, और दूसरा एडजेसेंट एंड हाइपोटेन्यूस। तो ये दो रेशियोज की हम पहले बात करेंगे कि साइन ऑफ थीटा। अब मैथमेटिक्स में आपको पता है ना कि हम कोशिश करते हैं कि पूरे सेंटेंस या वर्ड्स या कोई एक्सप्रेशंस, डिटेल्ड एक्सप्रेशंस ना लिखें, इसलिए हम इसको यूं लिख लेते हैं, साइन थीटा। इसी तरह से ये जो दूसरा है कोसाइन थीटा, कोसाइन ऑफ थीटा, तो इसको हम इन शॉर्ट वी राइट इट एज कॉस थीटा। एक्चुअली द कंप्लीट वर्ड इज कोसाइन, कोसाइन ऑफ थीटा। तो यू कैन से दैट साइन थीटा is a word in one language which means opposite to theta, sine of theta, because there is no ratio without the reference of angle. Angle must have. So sine of theta is opposite over hypotenuse. तो आप ये समझ लें कि ये जो रेशियो है उसको साइन थीटा बोलते हैं। उसका जो मीनिंग वर्ड का जो भी हो तो वो हम इसको यूं इंटरप्रेट कर सकते हैं कि एक्चुअली दिस रेशियो इज नोन एज साइन थीटा। एंड नाउ द अदर रेशियो कॉस थीटा। कॉस थीटा असल में क्या है? कोसाइन थीटा। तो ये आप अभी हम इसके बाद कंटिन्यूअसली कॉस थीटा का ही वर्ड यूज करेंगे, बट यू मस्ट नो दैट एक्चुअल वर्ड इज कोसाइन। तो कोसाइन मीन्स adjacent over hypotenuse। अब ये दो रेशियोज आपने याद रखनी है, वो तीसरी जो है उसकी बात हम इसके बाद करेंगे। तो इन दो रेशियोज में एक चीज आप नोट करें ना अगर, कि ये क्या है कि हाइपोटेन्यूस दोनों में कॉमन है। तो इसको बस इस तरह याद रखें कि दोनों के नीचे हाइपोटेन्यूस तो आता ही है ना, हाइपोटेन्यूस तो रहेगा साथ। तो जो फर्क क्या हुआ फिर साइन और कॉस में, ये तो हो गया कि जो दोनों में सिमिलैरिटी है कि बोथ ऑफ देम हैव हाइपोटेन्यूस इन डिनोमिनेटर।
अच्छा, इसको अभी मजीद देखें कि अगर ये है ऑपोजिट ओवर हाइपोटेनियस और ये है एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनियस। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने ये बात की कि द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस इज ऑलवेज longest. Hypotenuse is the longest side in any right angle triangle, and the reason is that sum of these two is 90, whereas this angle alone is equal to 90. जब ये इसके अकेले की वैल्यू 90 है, तो this will always be the largest angle in a triangle. So 90 degree is the largest angle. So side opposite to the largest angle must always be the largest. तो यहाँ दोनों में अब ये बात कॉमन आ गई कि ये ऑपोजिट ओवर हाइपोटेनियस हो या एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनियस हो, इन बोथ ऑफ द केसेस हाइपोटेनियस इज लार्जर देन ऑपोजिट एज वेल एज एडजेसेंट। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि दिस वैल्यू विल ऑलवेज बी लेस देन 1, क्योंकि ये जो इसके वो फ्रैक्शन बनेगा उसमें डिनोमिनेटर इज लार्जर देन न्यूमरेटर, दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। सो साइन थीटा, रेशियोज ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर ऑलवेज इन प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो प्रॉपर फ्रैक्शन दैट इज ऑलवेज लेस देन 1। तो इसको फर्दर चले मैं ये भी लिख देता हूं साथ कि हेंस वैल्यूज ऑफ these two ratios are always less than 1. तो साइन थीटा भी हमेशा 1 से कम होगा और कॉस थीटा भी 1 से कम होगा। अगर अब मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि रीजन क्या है, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है हाइपोटेनियस है एंड हाइपोटेनियस इज ऑलवेज द लार्जेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, hence the denominator being the largest, that means this value must not exceed 1, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये लेस देन, ये आगे चल के हम एक्सप्लेन करेंगे, लेस देन और इक्वल टू 1, दिस इज आल्सो लेस देन और इक्वल टू 1, मैक्सिमम वैल्यू इज 1। तो ये एक तो ये बात समझनी है। दूसरा जो है, अब इसको आपने इस तरह से जो याद रखने वाली बात जो मैं कह रहा था कि क्योंकि ये जो है हाइपोटेनियस तो कॉमन हो गया दोनों में, इसको तो याद रखने वाला कोई मामला ही नहीं है कि दोनों के नीचे आपने हाइपोटेनियस रखना है। तो याद क्या रखना है? तो आपने याद ये रखना है कि साइन थीटा is for opposite and cos theta is for adjacent। सिर्फ एक ये बात आपने याद रखनी है कि साइन थीटा ऑपोजिट के लिए यूज होता है, तो whenever like साइन थीटा, अब ये रेशियो फर्ज करें आपने लिखनी है साइन थीटा, so what you need to recall that is opposite, क्योंकि आपको ये तो पता ही है कि चाहे साइन हो या कॉस हो दोनों के नीचे हाइपोटेनियस तो आना ही है, इसलिए इसके बारे में तो कोई कंफ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए ना। तो जो कंफ्यूजन है वो सिर्फ ये है कि साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू ऑपोजिट ओवर समथिंग, साइन थीटा ऑपोजिट साइन थीटा, इस तरह इन दोनों वर्ड्स को आप दोनों ऑर्डर्स में ऐसे याद रखें कि साइन थीटा आएगा तो आपके माइंड में हमेशा आना चाहिए कि दिस इज ऑपोजिट, एंड ऑपोजिट की बात होगी ट्रिग्नोमेट्री में तो आपके माइंड में फौरन ये आना चाहिए कि दैट इज साइन थीटा। इसी तरह से एडजेसेंट मींस कॉस थीटा। ये आपने इतना करना है
कि याद इस तरह रखना है और जब लिखने की बारी आएगी तो दोनों के नीचे हाइपोटेनियस आपको लिखना होगा। तो हाइपोटेनियस इज द लार्जेस्ट, देयरफॉर द वैल्यू इज लेस देन 1। ओके, साइन और कॉस को तो आपने ऐसे याद रख लिया, ये दोनों का मामला और तरह का है। और जो थर्ड रेशियो है टेंजेंट थीटा, वो जरा डिफरेंट है। वो इस तरह डिफरेंट है कि यहाँ पे इन दोनों रेशियोज का जो है 1/1 ऑपोजिट विद हाइपोटेनियस, एडजेसेंट विद हाइपोटेनियस, ये दो रेशियोज हो गए। तीसरी क्या रह गई? ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, रेशियो बिटवीन ऑपोजिट एंड एडजेसेंट। तो अगर हम इसको ऑपोजिट एंड एडजेसेंट करें तो ये हमें ये समझ आती है कि ये आपको अगर याद हो कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में ग्रेडियंट क्या था? ग्रेडियंट था राइज ओवर रन। तो राइज ओवर रन यानी वर्टिकल डिस्टेंस ओवर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। यहाँ पे अगर आप देखें, वर्टिकल इज ऑपोजिट एंड हॉरिजॉन्टल इज एडजेसेंट। तो एक्चुअली हम ट्रिग्नोमेट्री में राइज ओवर रन या वर्टिकल ओवर हॉरिजॉन्टल इसलिए नहीं करते कि इट इज नॉट नेसेसरी ऑलवेज टू बी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। ये किसी और जो है डायमेंशंस में भी हो सकते हैं, तो इसलिए इसके लिए हम ऑपोजिट और एडजेसेंट। बट सो फार यू कैन सी दैट राइज is opposite and run is adjacent, so this is equal to opposite and adjacent। तो इसको अगर आप यूं समझे कि टेंजेंट थीटा देन is equal to gradient। इसको यूं याद आप ऐसे रख सकते हैं, टेंजेंट थीटा is equal to gradient। तो जब आप रिकॉल करेंगे कि व्हाट इज ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट इज राइज ओवर रन यानी ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। तो आपको याद रखने में ये आसान हो जाएगा। तो नाउ दीज आर थ्री रेशियोज, बेसिक रेशियोज। नंबर 1 साइन थीटा, नंबर 2 cos theta, and the third one is tangent theta। तो sin theta को जो याद रखने वाली बात है, तो अगर हो सके तो आप साथ इसको रिपीट करें कि sin theta means opposite, cos theta is adjacent, and tangent theta is gradient। अब सिर्फ जब जहां तक याद रखना है वो ऑपोजिट के तौर पे आपने याद रखना है, लेकिन है तो ये कंप्लीट रेशियो है ना, असल में तो रेशियो है ये। तो इसलिए दिस इज ऑपोजिट ओवर हाइपोटेनियस, एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनियस, एंड ग्रेडियंट इज राइज ओवर रन। राइज ओवर रन, दैट मीन्स adjacent over hypotenuse, opposite over adjacent। तो इस तरह ये तीन रेशियोज को आप याद रख सकते हैं कि मैं इसको बीच में से हटा दूं। तो ये जो है टेंजेंट थीटा इज एक्चुअली इक्वल टू ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, साइन थीटा ऑपोजिट, cos थीटा एडजेसेंट, इस तरह याद रखना है, और tan थीटा ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। अच्छा, अब एक फाइनल चीज इसमें हम और आज का जो है कंक्लूजन, टेंजेंट थीटा, सिंस टेंजेंट थीटा इज ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। अगर हम ऑपोजिट को भी हाइपोटेनियस से डिवाइड कर दें और एडजेसेंट को भी डिवाइड कर दें, तो मैथमेटिकली बाय द रूल्स
it does not make a difference if we divide both numerator and denominator by the same value, it remains unchanged. But what we can see here, that opposite over hypotenuse is sine theta, and adjacent over hypotenuse is cos theta. So we can say that tangent theta is also equal to sine theta over cos theta. So these are two forms of tangent theta. One simply in terms of sides, opposite and adjacent, and the other one is sine theta over cos theta. तो ये जो है आज का conclusion यही है कि these are three ratios, and tangent theta has two forms. In two ways we can write it. Tangent theta is equal to opposite over adjacent, or you can write it as sine theta over cos theta. तो ये चीज है, टेंजेंट थीटा को इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो इतना फिलहाल आज के लिए जो है ये आपने याद रखना है। और इसमें ट्रिग्नोमेट्री में अगर इसी ऑर्डर में आप ये सारी जो लेसन्स इसके बाद भी अभी होंगे काफी सारे ट्रिग्नोमेट्री से, तो इनको अगर आप इसी ऑर्डर में फॉलो करते रहेंगे तो मेरा ख्याल है कि यू कैन लर्न द बेसिक आइडियाज एंड द ट्रू spirit of trigonometry inshallah within the parameters of syllabus of AS level. इसके बाद क्योंकि ये A2 में भी है ट्रिग्नोमेट्री, तो उसका फिर अलग से इसी के साथ कंटिन्यू करके हम देख सकते हैं। तो फिलहाल इसको आपने फॉलो करना है, तो साथ साथ इसको देखते जाएं। तो मेरा ख्याल है कि ये ट्रिग्नोमेट्री में अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम रहता है, तो मेरी कोशिश होगी कि आपको वो प्रॉब्लम ना हो। सो बाय द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अल्लाह हाफिज।